So, Jai Bharat to all of you. So, today is a very specific video for students who have got IIM Raipur calls. So, let's quickly get into this. But I admire IIM Raipur, although ये बाहर निकल गया कैप से, but still the questions which they have come up, a very good set of questions, right? और ये पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू को it will define. So, I think my request to all of you would be that put a lot of thought, lot of depth on these questions, right? Do not ignore these questions because these questions could mean a difference between selection and rejection of yours. So let's quickly go to these 5 questions are there. I will try my best to quickly get through it because you have a lot of time, to put on various aspects of preparation. So the first question is share an example of when your creativity or when you creatively combined different ideas or resources to achieve a specific goal. And what was the result? यही क्वेश्चन है आपका. So question is creatively combine different ideas or resource and to achieve a specific goal. Now देखिए ये दो तरीके से इसको आप आंसर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हु यू आर. अगर आप यू आर समवन जो फ्रेशर है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटर्नशिप का, राइट. और अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर प्रोफेशनल सेटअप और वहां से यू कैन रियली गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट. सो आई हैव टेकन फॉर फ्रेशर एंड बट आई एम श्योर ये वाला जो एग्जांपल आपको दे रहे हैं तो ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू इट. इवन वर्क एक्सपीरियंस पीपल विल बी एबल टू रिलेट इट. तो ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज हम लोग एक इंटर्नशिप में कर रहा था. आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप इन स्टार्टअप, right? And I noticed some kind of a inefficiency in my sales team. तो क्या inefficiency देखा आपने मार्केटिंग टीम में? दैट उनके पास जो लीड्स आ रहे थे वो ठीक से वो लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, राइट. सो यू सजेस्टेड अ CRM, customer relationship management software tool, and that kind of a tool was a kind of an analytics tool, which the marketing was already using but not properly, right? And you proposed using integrating this CRM software with some analytics tool. So they were already using CRM tool, but you integrated it with the entire marketing team. तो जैसे ही आपने कंबाइन किया ये सब रिसोर्सेस को, जो आपका लीड ट्रैकिंग है दैट बिकेम वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड इट स्टार्टेड जनरेटिंग डिटेल्ड रिपोर्ट्स एंड बोथ द टीम्स कुड यूज दिस, राइट. दो टीम थे, दोनों वो लोग यूज कर रहे थे. इसके चलते आपका कन्वर्जन जो है वो बढ़ गया एंड दैट इंक्रीज बाय लेट्स से 15% इन 3 months टाइम. और प्रोसेस भी है, इट बिकेम मोर एफिशिएंट and you were able to save hours of manual work because of this. And this experience told us the value of how you can combine different ideas and resources and achieve a very specific goal. So this, I would say, was a very good question, in fact, right. And this also gives you an idea about that cross functional collaboration से क्या हो सकता है. So I hope you are very clear about how this question has to be answered. Let's quickly go to the second question and I'll give you some idea about the second question, right? So second question says, describe an instance when you learned a significant lesson through direct experience. How did the experience shape your future approach? Now, again a question says, describe an instance. तो यहाँ भी example ही देना है. You learned a very important lesson through direct experience and you had some kind of experience और आगे की approach जो है, future approach कैसे आपको करना है. तो यहाँ भी आप दे सकते हैं. लेट्स टेक अप आपने कॉलेज में कोई बिजनेस कंपटीशन यू पार्टिसिपेटेड इन, राइट. एंड शुरुआत में जैसा होता है यंग लोगों में, यू ट्राई टू माइक्रो मैनेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. तो इससे क्या होता है कि योर टीम ऑल्सो गेट वेरी ओवरवेल्ड और यू ऑल्सो गेट ओवरवेल्ड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज, राइट. हर चीज आप खुद से करना चाहेंगे तो नहीं होता है. So you realize that the importance of delegating the task is very important. So you started delegating and trusting team members to leverage their strengths, right? उसके बाद से you focused on empowering the team
which led to you and your team winning the second place in competition. So what does this teach? So your experience obviously was very good, and your future approach also, you learned that as a leader, it is not important to kind of put all the powers on self. You have to decentralize. You have to leverage all these things, right? और आपको delegate करना पड़ता है और delegate करने से the work becomes faster, the work becomes better, and you were able to manage this, right? So I just gave you a one small example again, जहाँ पर you can give an experience and this experience, how did it shape your future approach? So this was again a very good question, which you can really answer like this. Third question. So, what do you consider your most notable achievements in your career or education? And what challenges did you face and what steps did you take to overcome them? I think this was the easiest question. यहाँ पर आपके पास बहुत रॉ मटेरियल्स है बात करने के. लेट्स टेक अप करियर. अब दो तरह के स्टूडेंट बोल सकते हैं हम. सपोज आप अगर मेरी तरह वाले स्टूडेंट हैं, सो आई डिड नॉट हैव टू मच ऑफ academic achievements till my graduation. It happened after graduation. स्कूल में ठीक है, आई वॉज एबल टू डू वेल, बट नॉर्मली बिजनेस स्कूल के अगर आप आंसर्स इस तरह के आईएम्स में लिख रहे हैं ना, तो दे वांट योर रीसेंट कॉलेज वाला that kind of experience to share, or you can take it from work experience again. So let's take up, if you are one of the toppers and all that, so you can always talk about notable achievement in your career. राइट. एंड अगर वर्क वाइज अगर आप देखें तो सपोज आपके वर्क के चलते कंपनीज परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, और ऐसा नहीं है कुछ ड्रामेटिक, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया. नॉर्मली 10% का ग्रोथ होता है, बट बिकॉज ऑफ योर इनोवेशन, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर टीम वर्क, राइट, योर कंपनी वॉज एबल टू गेट 13% ग्रोथ. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. सो यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ इंस्टेंसेस. और एक बहुत पॉपुलर और ठीक ठाक भी, मान लीजिए आप वर्क नहीं करते हैं एंड you've got 95 96 percentile in CAT, और मैथ्स में 98 ले आए, DILR में 99 ले आए. आई थिंक दीज आर ऑल्सो वेरी नोटेबल अचीवमेंट्स, राइट. इट्स नॉट ईजी. IIT जेई में फेल कर गए, नीट में फेल कर गए, बट यहाँ पर यू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड देन यू डिड द राइट थिंग एंड यू गॉट द राइट रिजल्ट. इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. देर इज नथिंग, एंड यू कैन राइट व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस. लेट्स टेक अप, आई एम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, बिहार बोर्ड, एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था इंग्लिश के बारे में. And I started reading novels, people suggested, I started doing word meanings, and I scored 99.9 in English. Now, is that not a very good achievement? मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, right? And I was able to really manage these things. So I think this is again, if you are from a vernacular medium and you've been able to do that, I think that's also quite a good achievement. So this also you can write. So I hope this question will not trouble you at all. And work se to khair, you can put up lots of instances where you can put it. Let's take up fourth question. So the fourth question says, do you consider being emotional a strength or a weakness in a professional context? Provide an example from your own experience to support your perspective. अब देखिए इसमें क्या है ना, अगर आपने काम के समय में प्रोफेशनल वर्ल्ड में धोखा खाया, ठीक है, तब तो आपके लिए ये इमोशन जो है वीकनेस बन गया. और उसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर आप किसी को बोले कि हाँ हाँ आई वॉज इमोशनल और हम धोखा खा गए, सो अब यहाँ से आई एम गोइंग टू बी मच मोर रैशनल रादर देन इमोशनल, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ऐसा हुआ था शुरू में, और कभी कभी अभी भी हो जाता है, दैट आई एम कंसिडर्ड अ बिट सॉफ्ट, राइट. सो आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग पीपल, राइट. बट यू फाइंड सम ऑफ द टाइम एम्प्लॉय जो है वो दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट. वो देख लेते हैं, अच्छा ठीक है मेरा बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है या फिर डांटता नहीं है, राइट. सो इन दैट केस छुट्टी ले लेते हैं वो लोग, और अनड्यू भी छुट्टी ले लेते हैं. तो दैट टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉय, आई एम बीइंग इमोशनल, एंड somebody is making me an emotional fool and taking advantage of that. So that could be a lesson, and I've learned my lesson hard way. So now I speak out, isn't it? Similarly, a lot of you might actually, help a team member out in a situation where member needed you the most, and because of that, the team rallied. बाकी लोगों ने
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और आपका परफॉर्मेंस जितना आपने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया, राइट? प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस गुड टीम बिहेवियर इट फोस्टर्स एम्पैथी, बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस। तो आप इंटर्नशिप के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने जॉब के बारे में बात कर सकते हैं कि कोई टीम मेंबर आपका पर्सनल इश्यू से स्ट्रगल कर रहा था। इट कुड बी उसकी गर्लफ्रेंड उसको भगा दी थी, बॉयफ्रेंड भगा दिया था, राइट? समथिंग लाइक दैट, ब्रेकअप हो गया एंड दैट पर्सन वाज डाउन। और हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, किसी घर में हेल्थ इशू हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट दैट पर्सन माइट बी इमोशनली वेरी डिस्टर्ब, राइट? दीज थिंग्स हैपन इन अ रियल दिस थिंग। सो आप लोगों ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, you help that person regain productivity, that person was not working, and this strengthened your working relationship, and because of that team morale went up. Emotional awareness like this can really help, and it can really lift the entire team. So this could also be a example you can give. So if you see all four questions up till now we have looked at, everywhere they are looking at examples from your side, और लिखिए वही which you are ready to discuss in an interview, राइट? तो आप कुछ भी ऐसा बना करके मत लिख दीजिए, छोटा ही लिखिए कुछ, बट कोशिश कीजिए दैट it is impactful and this is something which is real, right? You think they and find out something. It could also be in school where you've helped people. It could also be in a social work setting जहां पर आप NGO work कर रहे हैं. It could be your dance class, it could be your chess class, it could be your cricket, it could be your football. So it's not necessary that it's always a if you have not worked, then if you have not done any internship, so it's a professional context तो आएगा नहीं. But even in those situations फिर आप क्या कर सकते हैं? So you can take up those situations and also do it. Let's come to the last question now. Right. So the last question says, what do you believe or which do you believe is more valuable? Knowledge and expertise or networking skills? Very good question. And it says elaborate with your own experience. Fantastic questions, I will say. So, if I have to ask, if you ask me personally, then I would prefer knowledge and expertise along with networking. So it's like a hybrid model, best of both the worlds. Because ये सारा नेटवर्क नॉलेज और एक्सपर्टीज रह जाएगा अगर आपका नेटवर्किंग नहीं है, तो लॉट ऑफ टाइम्स यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज। और अगर सिर्फ नेटवर्किंग है, जान पहचान पैरवी जिसको बोलते हैं, राइट, एंड यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज, हु इज गोइंग टू टेक रिस्क ऑन यू? I think a blend of both is very, very important, and you can elaborate with your own experience. For example, you can say you attended a business conference, where you connected with an industry professional, और उसके बाद वो आपका मेंटोर बन गया। मेंटोर बन गया, उसने बहुत आपको गाइडेंस किया, और उसके बाद फिर आपको एक टॉप फर्म में आपको इंटर्नशिप मिल गया, और फिर वहीं से आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया, एंड यू गॉट अ गुड जॉब. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंटर्नशिप नेटवर्किंग स्किल्स, और आपका अगर नॉलेज और एक्सपर्टीज पहले से था, हाउ इट कैन हेल्प यू आउट. और ये तो कितना होता है, प्लेसमेंट सेल के लोग होते हैं, या बिजनेस स्कूल में, BBA वाले कॉलेज में, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, कई बार नो आपको मिलता है कि आप, ये मैनेजर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर के रूप में आ रहे हैं, और उनको आपको एयरपोर्ट से गाड़ी से लेकर के आपके कॉलेज तक लाना है. अब उस गाड़ी से कॉलेज के बीच में आप उनसे बात करते हुए आए, एंड द पर्सन गॉट इम्प्रेस्ड एंड गिव्स यू अ कार्ड, एंड देन सेज कि ओके जब तुम्हारा खत्म होगा तो बोलना, राइट? और फिर जब आपका कॉलेज खत्म होने का समय आया तो आपने उनको कॉल किया या CV भेज दिया, ये सेट कि अच्छा ठीक है आ जाओ, हम इंटरव्यू तुम्हारा करा देते हैं. तो मैक्स क्या कर सकते हैं, HR को बोल के इंटरव्यू करा सकते हैं. अब नाउ योर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज वाज देयर, right, and you cracked it. So obviously that became very, very valuable. So this kind of a situation I'm sure you can relate to, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, right? So you can also talk about this. So this is again, और कई बार सिर्फ जॉब के केस में नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि आपका, लेट्स टेक अप, आउटसाइड म्यूजिक में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, chess में, in those situations also, non-professional so-called setup also, जान पहचान can make a difference. Your parents के जान पहचान, your relatives के जान पहचान, so they can just put you there, and because you've done a lot of things, that can make a, deal for you, and then you can really do well. So I hope I was of some help to you. और आप कमेंट्स वाले में डाल सकते हैं, बिकॉज इसमें तो बहुत कम ही लोग होंगे, राइट? आपके इतने सारे मेंटोर हैं, सो मेनी पीपल आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन, सो आई डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी पीपल. मेरे अपने स्टूडेंट तो मेरे पास आ ही जाते हैं,
राइट, एंड दे पर्सनली हैव एक्सेस टू मी। बट इन दैट केस मेरा नंबर डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप भी मुझे ये सब आंसर्स भेज सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट, यहाँ भी कमेंट करके डाल दीजिए आंसर्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू रियली रीड देम, एंड इफ यू गिव यू अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड बैकग्राउंड ऑफ योर, then I will definitely try and get back to you and give my feedback, right? Thanks a lot, and my good wishes and blessings as always, and do well. This would become the base of your interview. And remember my word, there is no percentile जहां से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कन्वर्ट अगर नहीं होता है ना, तो मेरी अपनी गलती के चलते होता है, right? Not because they have not given you an opportunity. In fact, they have given you opportunity. The onus and responsibility is now on me, that I'm so well prepared, so much in depth, so much of width. So both width and depth, that अगर उनका 25 मार्क्स हो तो 25 में 25 दें, एंड आई शुड नॉट वरी कि मेरा 10th में थोड़ा कम था तो 12th में थोड़ा कम हो गया, इधर कम हो गया, उधर कम हो गया। आई शुड नॉट वरी अबाउट इट। ज्यादा बहुत ज्यादा वो सब कॉम्पोजिट स्कोर भी आप ज्यादा चेक मत कीजिएगा। अरे आपको कॉल आ ही गया, आप जाकर, आपका काम है अच्छे से लिखना है, एंड लीव इट टू देम, राइट? अब फिर इंटरव्यू कॉल आ गया, वहां पर आप अच्छा करना है, लीव इट। डोंट कैलकुलेट टू मच, इट विल अननेसेसरी रियली बॉदर यू। रादर यूज दैट टाइम टू रीड and think about a lot of things, think deeply about self, different situations, try and recollect, note a lot of notes, discuss with your mentor, ask them to take up a lot of times interviews. I think these are more crucial things, right? Take care.